नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारे भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, वो विदेशी धरती हो या देसी धरती हो, डॉक्टर एस जयशंकर हमेशा एकदम अपने जो भी उन्हें बोलना होता है उसके लिए बिल्कुल मुखर होकर वो बोलते हैं। वो ये लिहाज नहीं करते कि मैं देश में हूँ या विदेश में होकर भी विदेशी पत्रकारों के सामने बोल रहा हूँ या विदेशी ज़मीन पर, मतलब उनके ही देश में उनके ही पत्रकारों के सामने वो कुछ जो स्टेटमेंट होते हैं वो अपने बोल्ड स्टेटमेंट देने के लिए फेमस हैं। तो आइए देखते हैं उनके कुछ 5 बहुत बड़े ऐसे ही इंसिडेंट इस वीडियो में। From TV Pakistan, if you would like to entertain my question answer. Okay. How about pollution? First of all, India and Pakistan have been accusing each other about terrorism. And Rabbani, as you said, yesterday, she brought up here. Could you come to the question? My question is, how long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war, number one. And second, and how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this. Because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So, look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does, increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message goes through. India has extended the import of Russian oil. It is a totally opposite position of the European sanction. Will you change your attitude during the G20 presidency? First, we need to establish the facts very clearly. The European Union, between February 24th and 17th November, has imported more fossil fuel from Russia than the next 10 countries combined. Just as I were to give you an India comparison, the oil import in European Union is like 6 times what India has imported. Gas is infinity times because we don't import, whereas European Union has imported $50 billion worth, 50 billion euros worth. Even coal imports from Russia by European Union, I'm not singling any particular country, is 50% more than India's. So the remark that you made that, this is the way the European Union is going and this is the way India is going, I would very respectfully suggest maybe European Union is actually doing something very much more than India is doing it. Mr. Borrell is not here today, not here now, but he was in the meeting, and he told the Financial Times before the meeting that the EU should be putting sanctions on refined oil products from India using Russian oil. You're right, Mr. Borrell is not with us now, but I really don't see the basis for your question because my understanding of the Council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014.
I actually want to follow up with something you said at an India Today event a while ago. You were asked about India's downgrading in Freedom House and VDEM and other democracy scores. And the journalist asked you, quote, how do you see this play itself out in terms of how India is being perceived by the world and these new reports? In your response, you said, quote, it is hypocrisy. I thought you were supposed to ask me a question. I am asking you a question. It is hypocrisy. We have a self-appointed custodians of the world who find it difficult to stomach that someone in India is not looking for their approval, is not willing to play the game they want to play. That doesn't actually answer the journalist's question. So I want to ask you again, are you concerned that perceived democratic backsliding in India is going to undermine its efforts to become a rising power in the world? I think it answers the question if you would be objective enough to understand it. I think it says very clearly that the people who are writing these reports have a strong bias. Often they distort facts. Many of these reports are actually riddled with inaccuracy. So I put it to you, there's an ideological agenda out there. I don't know why that's hard to understand. I just wanted to follow up, Minister, with a quick clarification. You're saying you have no evidence, this is related to the Canadian story, which I'm sure you're sick of speaking about. Have the Canadians, there's been reporting that there have been progressive visits from the Canadians to India, including in August. You're saying that you've never familiarized yourself with the documents that were, or no documents have been provided to you by the Canadians that purport to show evidence that Indian officials in Canada were aware of this attack. You have not seen Let me intercepted. Yeah. Are you saying the Canadians gave us documents? I'm asking you if the Canadians gave you the intercepted documents. No, look, Indian diplomatic communication. I have said that if somebody gives us specific or relevant information, we're prepared to look at it. So you have not received those intercepted communications from If I had, would I not be looking at it? I'm asking you for a yes or no. I think he's given us the answer. And then the other question I was going to ask. No, I'm not answering. तो देखा आपने वो किस तरीके से हर किसी को बिल्कुल एकदम शट अप कॉल दे देते हैं। डायरेक्टली शट अप नहीं बोलते, लेकिन उनका जवाब ऐसा होता है कि सामने वाला बिल्कुल उसकी ज़ुबान बोलती बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे देश के नेता हैं, बाकी इतने सालों से जो पिछले 70-75 सालों से जो नेता थे, उनको भी इसी तरीके से अगर बोल्ड होते तो आज देश की छवि काफ़ी बदल चुकी होती। जो आज बदलना शुरू हुई है वो पहले से बदलना शुरू हो चुकी होती। लेकिन कहते हैं हर चीज़ का एक वक्त होता है, और शायद ये भारत का वक्त है, ये भारत के उभरते हुए जो सितारे हैं उनका वक्त है। इसलिए जो भी जयशंकर जी कहते हैं उसकी बहुत अहमियत दी जाती है और उसकी वैल्यू की जाती है, इसलिए आज वो ऐसा कर पा रहे हैं। उनका एक और बहुत फेमस स्टेटमेंट है, जब उनसे एक, हालांकि इस वीडियो में वो नहीं है, लेकिन जब एक बार उनसे पूछा गया कि जर्मनी की ही बात है शायद, जर्मनी में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है, उसमें आप किसके साथ खड़े हैं, रूस के साथ या यूक्रेन के साथ, और अगर चाइना इंडिया पे अटैक कर देता है तो आप किसको चाहेंगे कि आपको कौन से देश सपोर्ट करें। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि जो यूरोपीय यूनियन है उसको अपनी ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है और दुनिया की प्रॉब्लम उनकी खुद की प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर इंडिया चाइना का तो काफ़ी रशिया यूक्रेन से भी पहले से चल रहा है तनाव, उसके बावजूद वो प्रॉब्लम केवल चाइना और इंडिया की प्रॉब्लम है, जबकि रशिया यूक्रेन जो अभी युद्ध शुरू हुआ है 1-2 साल पहले ही, वो प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। आपको इस माइंडसेट से बाहर आ जाना चाहिए। तो ऐसे स्टेटमेंट देने वाले हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी के बारे में एक और बात है, जब आप रील्स देखेंगे उनकी, या यूट्यूब शॉर्ट्स देखेंगे, या इंस्टाग्राम रील्स देखेंगे, हर जगह भारत के किसी भी राजनेता के कंपैरिजन में, इवन इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी के कंपैरिजन में भी सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट्स रील्स वायरल होती हैं वो होती हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी की, क्योंकि उनका जो ये बेबाक तरीका है बोलने का, ये लोगों को बहुत पसंद है और लोग इसे बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं।
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी अपडेट्स देखने के लिए, बल्कि जियो पॉलिटिक्स में अपनी ताज़ा तरीन खबरें जानते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।